morning, dear students. I am Ms. Navida Sheikh from Brahan Mumbai Mahanagar Palika MCGM virtual class. I welcome all my dear students to another and interesting session. In today's session, we'll be learning something new and interesting from a science textbook. So let's get started. Good morning, dear students. I am Mrs. Navida Sheikh from MCGM virtual class. I welcome all my dear students to another and interesting session. In today's class, we'll be continuing with the very interesting chapter that we've started with, that is substances in common use. This is part 3. We have already uploaded part 1 and part 2 of this chapter. In part 1, we have learned about the important salts like the common salt that is used in our houses. We have learned about how washing soda, baking soda is used in our houses. We have also learned in part 2 about the radioactive substances, and today we'll be continuing with the next part of the chapter. In this chapter, in this video, we'll be talking about some chemical substances in day-to-day life. Okay, we have already completed the first and the second part, and today we'll be learning some chemical substances which are very important and very essential, and they are used on a large scale in our day-to-day life. Let us talk about some of the substances that we use in day-to-day life. The food that we eat, objects like clothes, watches, utensils, medicines, and other objects are made from various kinds of matter. These affect our health directly or indirectly. Let us learn about some such substances. The very first thing that we're going to talk about is food colors and essence. Now, we make a use of food colors in everything. आप लोग जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, उसके अंदर भी आप लोगों को अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं. कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ऑरेंज कलर की है. There are some cold drinks which are green in color. Some are black or some are brown in color. So these colors which you are using or in your food, in various items, apart from cold drinks, हमारी जो jellies है, cakes है, gems है. Now all these things have a coat of color on them. Now these colors could be in the form of powders, gels and paste. ठीक है, कैसी भी फॉर्म में हो सकता है. Food colors are used in domestic as well as commercial products. In our houses also, when you eat Chinese item जब हम लोग खाते हो, शेजवान राइस खाते हो, शेजवान नूडल्स खाते हो, उसमें एक रेड कलर दिखाई देता है ना, खाने के टाइम पर रेड होता है वो जो रेड है वो भी कलर है. तो हमारे खाने में डोमेस्टिक यूज के लिए भी, like in our house when you're making or baking cakes, that time also you add colors to the cream so that you have different colors. एंड इन योर फूड ऑल्सो, कभी कभार जब हम लोग के घर में बिरयानी बनती है तो यू ऐड येलो कलर, और जलेबी बनती है तो उसमें भी हम लोग एक अलग कलर जलेबी का कलर डालते हैं. सो इट इज़ यूज्ड इन डोमेस्टिक एज वेल एज कमर्शियल प्रोडक्ट्स. कमर्शियल प्रोडक्ट जैसे कि हमारे जो इंडस्ट्रीज़ है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट जेम्स है, जो जेलीज आप लोग खाते हो, चॉकलेट्स जो खाते हो, उसके अंदर भी ये फूड कलर्स ऐड किए जाते हैं. Okay, certain colors and essence are added to ice creams, ice candies, sauces, fruit juice, cold drinks, pickles, jams and jellies. अगर आप लोग आइसक्रीम्स खाते हो तो you all know that ice candies जो होती है, जो बर्फ की आइसक्रीम्स होती हैं, ऑरेंज कैंडी है, लेमन है, those all have color in them, right? So fruit juices जो हम लोगों को बाजार में मिलते हैं, they have a very different color as compared to the fruit juices that we prepare at home. जो आप लोग घर में बना के पियोगे उसका कलर और जब बाजार से ला के पियोगे उसका डिफरेंट कलर में बहुत डिफरेंस होता है, बिकॉज उसमें कलर ऐड किया जाता है. आप हमारे घर में फ्रूट जूसेस में कलर ऐड नहीं करते ना, इसलिए उसका कलर थोड़ा डिफरेंट होता है. ऑलराइट, फूड कलर्स आर ऑफन फाउंड टू बी एडेड टू पैकेज्ड मीट, chili powder, turmeric, sweet and other similar substances so as to give them a good color. हमारे घरों में जो हम लोग हल्दी इस्तेमाल करते हैं, लाल मिर्ची का पाउडर इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर भी कभी कभार कलर ऐड किया जाता है ताकि हमारा खाने का कलर एनहांस हो. ठीक है, हल्दी और ज़्यादा येलो लगे, रेड कलर जो ऐड किया जाता है इनटू रेड चिली पाउडर, ताकि जब हम लोग रेड चिली पाउडर ऐड करें तो वो हमारा ग्रेवी अच्छा रेड कलर लगे और अच्छा लगे. ठीक है, सो these are few of the things that we make use of and they are used in our food items
एंड वी हैव सीन कि किस तरीके से ये डोमेस्टिक हमारे घरों में भी इस्तेमाल होता है और कमर्शियल प्रोडक्ट्स में भी ये फूड कलर और एसेंस का इस्तेमाल होता है. Now let us see how are they harmful to us. So the harmful effects of artificial food colors, we need to know them because we are using them now and again. इसीलिए बोला जाता है ना कि बाहर का फ्रूट जूस मत पियो, कैंड जो जूस है वो नहीं पिया करो. Why do they say that? Why do your elders talk like that? Because they know that it has harmful things in them and they will cause problem to your health. Okay, so food colors added to pickle, jams, and sauce contain small quantities of lead and mercury. These can be harmful for those who consume these products on a regular basis. Diseases like ADHD, that is attention deficit hyperactivity disorder, can affect children due to excessive consumption of foods with added food colors. You must have seen your younger brothers and sisters who are very active. They cannot sit in one place. They keep on moving from one place to the other now and again. Okay, और हम लोग को चिल्लाते रहते हैं कि बैठते नहीं हो एक जगह पर, क्यों मस्ती कर रहे हो, क्यों मस्ती कर रहे हो. Now that is because of the jellies, the lollipops, all the items that they are eating which has color in them and they are sweet also. And that causes a disease called as ADHD, which is the full form is attention deficit hyperactivity disorder. Okay, so it is very problematic for the people around क्योंकि उन लोगों का concentration level बहुत कम हो जाता है. They are not good in studies also because they cannot sit and do one thing at a time. Okay, for a very long time. They need to keep switching to other things. Now, apart from that, it also can lead to different types of cancer if it is people are eating very much. If you love Chinese, if you are eating many a times these Chinese items, there are chances that it can accumulate in your stomach and it could lead to different types of cancer in the body also. Okay, it could lead to various type of allergies also, asthma also, and hyperactivity. Apart from that, food colors are natural as well as artificial. ठीक है, so ऐसा नहीं है कि ये खराबी होते हैं. जो natural होते हैं they are good also because you're getting it from the plants, okay, from the flowers, from the leaves of some or the other kind of plant or tree. The food colors prepared from seeds, beetroots, flowers, and fruit concentrate are natural. Tratrazine, sunset yellow are artificial food colors which are used extensively. However, overconsumption of artificial food colors can be detrimental to health. मतलब हमारी health के लिए हानिकारक होती है. Therefore, usage of natural food color is always good. तो हमारे घरों में जो अगर यूज़ करते हैं हम लोगों को ज़्यादातर की कोशिश करनी चाहिए कि वो ऑर्गेनिक फूड कलर्स हो जो नेचुरली प्रिपेयर हुए हैं और जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं. Now we will come to a very interesting topic, that is dye. The colored substance which on applying to an article imparts that color to the article. अब क्या है यहाँ पर ऐसा एक पाउडर, ठीक है, कोई भी तरीके की चीज़ पाउडर या फिर है ना, अगर हम लोग एक कोई चीज़ को लगाते हैं तो उसके अंदर वो कलर आ जाता है, वो अपना कलर दूसरी सब्सटेंस को इम्पार्ट करता देता है एंड दैट इज कॉल्ड एज डाई. Generally, a dye is soluble in water and insoluble in oil. Often, a mordant has to be used to fix the color after dyeing a cloth. Plants are the main source of color for preparation a natural dye. Roots, leaves, flowers, bark, fruits, seed, fungus, and pistils are used for making dyes. In Kashmir, a very good dye is made from saffron. ज़ाफ़रान बोलते हैं ना, उससे भी एक अच्छा डाई फॉर्म होता है बिकॉज ज़ाफ़रान भी हम लोग खानों में ऐड करते हैं उसे कलर देने के लिए, है ना, which is used to dye fibers from which saris, shawls and dresses are made. Now, everybody knows how expensive saffron is. So, the items that you're getting which are dyed from these are also very costly. But many people are engaged in this occupation as their means of earning a livelihood. The use of henna leaves to color hair is safe for health. Okay, हम लोगों को बोला जाता है जो आर्टिफिशियल कलर है वो डाई नहीं करना चाहिए बिकॉज उससे हम लोगों का एलर्जीज हो सकती है,
पिगमेंटेशन हो सकता है, आईज में इरिटेशन हो सकता है, हेयर डैमेज हो सकते हैं। बट द हेना लीव्स, जो मेहंदी की पत्तियां होती हैं, उसे ग्राइंड करके अगर उसका हम लोग पाउडर का पेस्ट बनाकर हमारे बालों में अगर लगाएंगे तो इट एक्ट्स एज अ नेचुरल कंडीशनर ऑल्सो फॉर योर हेल्थ, फॉर योर हेयर, एंड इट इज गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो. William Henry Perkin invented an artificial dye in 1856. Artificial dyes are classified into many types on the basis of chemical properties and solubility. कुछ डाइस पानी में soluble है, कुछ ऑयल में है, ठीक है, तो उस हिसाब से भी उसे बाइफरकेट किया गया है. Petroleum products and minerals are used in these dyes. Let us see the uses of the dyes. They are used for coloring cloth and hair. Everybody knows हमारे घरों में अगर ड्रेस का मैचिंग फॉर गर्ल्स स्पेशली ड्रेस का कोई दुपट्टा मैचिंग नहीं मिलता है तो वी गो टू दैट पर्सन एंड डाई करने वाले के पास हम लोग जाते हैं और उसे बोलते हैं ये कलर को डाई करके दो, ये दुपट्टा कलर करके दो. Now that person has dyes with him. He tries to make that color and then fix that color into the fabric that you have given. Okay, and then it could be used. Apart from that, we color our hairs also, which is done with the help of the dye. Fluorescent colors are used to make street boards that are visible at night. Street boards रात में दिखाई नहीं देंगे, इसीलिए ये डाइज का इस्तेमाल किया जाता है ताकि रात में भी उसे क्लियरली पढ़ सके. Dyes are used to polish leather, shoes, purses and chappals. So when you are traveling through a ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे हम लोग अक्सर देखते हैं लोगों को पॉलिश करवाते हुए. तो पॉलिश एक्चुअली क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ डाई. आइदर उसके अंदर उन लोगों के पास ब्राउन कलर का पॉलिश होता है या फिर ब्लैक कलर का. एंड विद दैट दे पॉलिश द शूज और द चप्पल्स दैट यू आर वेयरिंग. Now let us see the adverse effects of it. हम लोगों ने उसके uses देख लिए, हम लोगों ने उसका properties देख लिए. अब now we are going to learn about the adverse effects or harmful effects of the dyes. Dyeing hair can have adverse effects like hair fall, damage to hair texture, burning of skin, adverse effect on eyes, etc. Lipstick also contains a dye named carmine. It does not affect lips, but causes stomach disorders. Excessive use of plants for making natural dyes result in deterioration of the environment. अगर हम लोग ज़्यादा natural dyes का इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है. और अगर हम लोग प्लांट्स को काटते चले जाएंगे नेचुरल डाइज बनाने के लिए तो क्या हो जाएगा? हमारा जो एनवायरनमेंट है वो उसकी जो इट विल कीप ऑन डिटोरिएटिंग. ठीक है, कम होता जाता है ना, हमारे प्लांट्स वगैरह हमारे एनवायरनमेंट से कम हो जाएगा तो हमारे एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ता है. ठीक है. Let us talk about artificial colors. Nowadays we make use of artificial colors. We are coming up with a very nice festival that is Holi, that is Rang Panchami. We regularly use artificial colors on Rang Panchami, right? हम लोगों के यहाँ पर बहुत कम आजकल लोग नेचुरल कलर्स यूज करने लगे हैं, but earlier people made use of artificial colors only on Rang Panchami. And in order to decorate the house by painting also, these artificial colors are used. The red color used on Rang Panchami is very dangerous. It contains high proportion of mercury in it. ठीक है, तो गर्ल्स ऑल्सो रिमेंबर जो रेड लिपस्टिक्स आप लोग लगाते हो, anything red in color which has artificial color in it will have mercury, and mercury is very problematic for your health because it leads to cancer. Okay, this poses risk like blindness, skin cancer, asthma, itching of the skin, permanent blocking of sweat pores, etc. Therefore, it is necessary that artificial colors are used cautiously. ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि इसे आर्टिफिशियल कलर्स को ध्यान से यूज किया जाए, किसी पे फेंका नहीं जाए. ठीक है, इट कुड कॉज वेरियस dangerous diseases actually. Okay, skin cancer is not a small type of a disease. It is a very dangerous disease also because it cannot be cured very easily. Okay, एस्थमा भी होता है लोगों को क्योंकि ये कलर अगर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू अंदर जाता है तो इट कैन लीड टू
asthma as well, itching of the skin, कभी कभार आंखों में चले जाने से मर्क्यूरी तो ब्लाइंडनेस भी आ जाती है, ठीक है. So it is very dangerous as well as you have to know how it has to be used. Let us talk about another important substance that we use daily or in our day-to-day life, that are deodorants. हम लोगों को पता है कि हमारे बदन में से एक odor produce होती है. Now how does this odor come? Whenever you sweat, okay, there are bacteria which are in your on your skin. They decompose the sweat. Okay, the body odor is caused by the bacterial decomposition of the sweat. A deodorant is used to prevent this odor. Everybody likes a fragrant deodorant to remain fresh the whole day. हम लोगों को पता है ना, हम लोगों को अच्छा लगता है ना डिओड्रेंट मारने से. वी फील फ्रेश ऑल्सो. हम लोग के बदन से बास भी नहीं आती है. देयर इज नो ओडर कमिंग फ्रॉम आवर बॉडी एंड वी फील फ्रेश ऑल्सो बिकॉज ऑफ द एसेंस, द सेंट दैट इज देयर, द फ्रेग्रेंस दैट इज देयर इन द डिओड्रेंट. This large-scale use of deo is in adolescence is a result of the advertisement shown on television. ज़्यादातर के हम लोग हीरोज को देखते हैं कि वो लोग डिओज लगा रहे हैं, ठीक है. Nowadays there are so many different types of ads on the television which promote the use of deodorants, right? Deodorants contain parabens. Remember that. It could be methyl paraben, ethyl paraben, propyl, benzyl, and butyl paraben, which are also contains alcohol in large proportion. Aluminium compounds and silica are also used in the deodorants. Now the deodorants could be ordinary deo, which contains a small proportion of aluminium. It decreases the odor of the sweat. हमारे जो sweat में से odor आता है उसे कम करता है. Ordinary deo. Antiperspirant deo. This is another type of deodorant. This decreases the extent of sweating. ये हमारे जो pores है ना, sweat pores है ना, उसे बंद कर देता है ताकि sweating हो ही ना. ठीक है, sweating नहीं होगी तो body odor ही नहीं आएगा. It contains about 15% of aluminium chlorohydrate. It clogs the sweat pores on the skin. Next we have is clinical deo. Some people sweat heavily. कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है and it has harmful effect on the skin. Clinical deo is meant for such people. It contains 20 to 25% of aluminium. It is used during the night. ठीक है, so there are three types of deos that we have talked about. First is ordinary deo, the other is antiperspirant deo, and the third is clinical deo for the people who sweat heavily, and it is used during the night. Now, as I told you that deodorants have parabens in them. ठीक है, it is not confirmed, but it is said that paraben is a cancer-causing agent. Always remember that. And apart from that, we have also seen that aluminium is also added into the deodorants. The aluminium also has some harmful effect on our body. Zirconium compounds are the most harmful chemicals in the deodorants. Disorders like headache, asthma, respiratory disorder, heart diseases are likely to occur with or without our knowledge. There is a possibility of various skin disorders and also skin cancer due to aluminium chlorohydrates. ठीक है? So this is why it is said that ज़्यादा आप लोग एक young age से अगर deodorants का इस्तेमाल करने लगते हो तो it is very dangerous because these deodorants keep on settling into your body because they're going inside your pores. Remember that. And that could lead to different types of problems in your body, and hence it should be avoided if not required. Let us talk about a very interesting topic, that is Teflon. Teflon is used for coating cooking utensils and industrial equipment to avoid sticking. We all have non-stick pans in our houses. ठीक है, ये जो non-stick pans है इसके ऊपर एक coating होती है जिसकी वजह से चीजें इन पे चिपकती नहीं है. Yes or no? It is the polymer of tetrafluoroethylene. Roy J. Plunkett discovered it in 1938. Its chemical name is polytetrafluoroethane. The properties, it is very easy to remember.
The atmosphere and chemical substances have no effect on Teflon. टेफ्लॉन के ऊपर कोई केमिकल या कोई एटमॉस्फेरिक सब्सटेंस इफेक्ट नहीं करता. ठीक है, इसीलिए हम लोग कोई भी तरीके का खाना अगर हम लोग नॉन स्टिक में बनाते हैं तो इजीली बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. नाइदर वाटर नॉर ऑयल विल स्टिक टू टेफ्लॉन कोटेड आर्टिकल. ना तेल लगता है, ना ही पानी उसके ऊपर चिपकता है. एट हाई टेम्परेचर do not affect the high temperature also do not affect the Teflon coating as its melting point is 327 degrees Celsius. Teflon coated articles are easy to clean. Everybody can see in this picture in the center. It is very easy to clean also. ज़्यादा उसे घसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बिकॉज उसको कुछ चिपकता ही नहीं है. जब कोई चीज़ चिपकेगी नहीं तो उसे मेहनत करके निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है. So and things do not, whenever you're cooking anything, it doesn't stick to the pans. Alright, so with this I hope Teflon की properties भी clear हो गई है आप लोगों को. Now let us see the uses of Teflon. Teflon is a poor conductor of electricity. Therefore, Teflon cladded wires and parts are used in high technology electronic instruments. It is used for making non-stick kitchenware. The colored metal sheets of two-wheelers and four-wheelers are given a Teflon coating to protect them from damage due to high temperature and rain. मैंने आप लोगों को बोली हूँ कि Teflon is not affected by high temperature. So the cars, the vehicles, two-wheelers and four-wheelers are coated with Teflon. और ताकि उसके ऊपर एक शाइन बनी रहे, उसका जो अंदर का मेटल है वो सड़े नहीं, खराब नहीं हो. ठीक है. It is also used in making non-stick items. It is also used in making electrical items because it is a poor conductor of electricity. तो उसे कोट किया जाता है ताकि लोगों को शॉक ना लगे. ठीक है. Next is powder coating. As itself is very simple, the word itself is very simple. Powder coating. कोई भी आयन सब ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, उसे एक पाउडर स्प्रे किया जाता है जिससे उसे कोट कर देता है. वो पाउडर उसे वो ऑब्जेक्ट को पूरी तरीके से कोट कर देता है और उसे हम लोग पाउडर कोटिंग कहते हैं. Now powder coating is also very important. Let us understand about that in detail. Powder coating is a method of applying a layer harder than paint on the surface of an iron object to prevent rusting. ठीक है, जंग खाने से बचाने के लिए पाउडर कोटिंग की जाती है कोई भी ऑब्जेक्ट, आयन ऑब्जेक्ट की मोस्टली. ठीक है, बिकॉज उसके अंदर जंग पकड़ लेता है. अब ये जो पेंट, जो पाउडर कोटिंग हो रही है, दैट इज मच थिकर, ठीक है, देन दैट ऑफ द पेंट. जो सादा पेंट करते हैं उससे ज्यादा हार्डर it is to apply this powder coating onto the objects. In this method, a polymer resin, a pigment and some other ingredients are mixed, cooled and ground into a fine powder. ठीक है, रेजिन्स को, रेजिन पॉलीमर रेजिन जो होता है, रेजिन है एक कलर, जो भी कलर का हम लोगों को पेंट करना है वो कलर, और कुछ अलग इंग्रेडिएंट्स भी यूज किए जाते हैं, उसे मिक्स किया जाता है, ठंडा किया जाता है, पाउडर किया जाता है, एंड देन इट इज sprayed. This powder is sprayed on the polished metal surface by electrostatic spray deposition. In this method, the particles of the powder are given by an electrostatic charge due to which a uniform layer of the powder sticks to the metal. Then the object is heated in the oven along with the coating. ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट को फिर क्या किया जाता है, हीट किया जाता है along with the coating, ताकि वो कोटिंग उस पर सेट हो जाए. This powder coating is highly durable, hard and attractive because it has various colors. There are various options of adding color to it. So people, here you can see these are so many different types of glasses. These are all glasses which are powder coated and they have such beautiful colors, right? This powder coating is highly durable, hard and attractive. Powder coating can be done on plastic and medium density fiber board in day-to-day life as well. Anodizing your I hope that you have an idea about anodizing. It is also a protective layer which is formed naturally on the surface of aluminium metal by reacting with oxygen in air. In the anodization process, this layer can be made by the desired thickness. आपके पास कोई भी एक substance है,
ठीक है, उसके ऊपर हम लोग को एक कोटिंग चाहिए। जैसे पाउडर कोटिंग कैसे हो रही थी, पाउडर को स्प्रे किया जा रहा था, अब यहाँ पर इसे डिप किया जाता है जो सब्सटेंस की कोटिंग चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, उसके ऊपर हम लोगों को कोटिंग करनी है, तो हम लोग उसे उस पानी उस लिक्विड के अंदर उसे हीट करेंगे, उसे सबमर्ज करेंगे, एंड देन यू विल get that object which has been ionized. Okay, so ionization is done by electrolysis. Dilute acid is taken in the electrolytic cell and aluminium article is dipped in it as the node. When an electric current is passed, hydrogen gas is released and the cathode and oxygen gas at the anode. A reaction with oxygen occurs and a layer of hydrated aluminium oxide is formed on the anode. That is the ion article. This layer can be made attractive by adding colors in the cell during electrolysis. Let us learn a very interesting part, that is the very last thing in the chapter, that is ceramics. Ceramic is a heat resistant substance formed by kneading an organic substance in water and then shaping it and hardening it by heating. Pots made by potter, Mangalore roofing tiles, construction bricks, pottery, terracotta articles are some examples of common ceramic articles that we see around. So if you see things like this, these are all made up of ceramics. ठीक है, सिरामिक के बहुत सारे आइटम हमारे घर में इस्तेमाल किए जाते हैं। अर्लियर रूफिंग के जो टाइल्स यूज करते थे वो भी सिरामिक्स के ही होते थे। जो पॉट्स बनाते हैं, here you can see they take a clay-like substance, a powder, they mix it with water and then they shape it. शेप देने के बाद इसे हीट किया जाता है। ठीक है, पहले सुखाया जाता है, फिर उसे गर्म किया जाता है, इतना हीट किया जाता है ताकि वो कड़क हो जाता है। ठीक है, फिर ये सॉफ्ट नहीं रहता। Ceramics can withstand high temperatures without decomposing. ठीक है, तो सिरामिक्स को अगर हम लोग हाई टेम्परेचर हीट भी करेंगे तो ये डिकम्पोज नहीं होता। सिरामिक इज ब्रिटल, मतलब इट कैन ब्रेक इजीली। वाटर रेजिस्टेंस मीन्स उसके अंदर पानी अच्छी तरीके से रहता है। एंड एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है उसके थ्रू। Therefore, it is used in electrical instruments for coating the interior of a kiln, the outer surface of sheets and blades of jet engines. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो बहुत इजीली रस्ट पकड़ सकती है, तो उसके ऊपर एक कोटिंग की जाती है। A certain type of ceramic tiles are fixed on the outer layer of a space shuttle. Some types of ceramic are used as superconductors as well. If you like the session, please do not forget to subscribe to our channel so that you can share, and this session was quite useful to you. In the next coming period, we'll learn something new and interesting. Till then, thank you.